Uh, so my name is Devashish. I am from Lucknow. I did my schooling from Lucknow City Mount City School, and then I went to Delhi University to pursue my bachelor's. I took admission in Ramjas College thereafter, and then for my master's as well. I prepared and I took admission in Hindu College, and I passed it like 4 years ago. And since then, I'm preparing for various competitive exams like RBI, State Statistical Officer, and ISS most importantly. Okay. Devashish, how many wings does Atmosphere have? So there are two wings. One is program implementation, and then there's NSO. Okay. And have you gone through the quarter one GDP data, which is Yeah, recently published? yes, sir. Is this data is good for India or average or bad? Sir, it's good as of now. Like the estimates that in election the finance minister had given that 6.3 to 6.4 or 5, like it's way above it. So we are on the right track as of now. Okay. Do you remember any data? So regarding the GDP, it was 7.8. It was 7.8. Is Yeah. it nominal or real? Sir, uh, it was not nominal, it was real. Which month has been covered in quarter one data? So it's the first quarter, the April, May, and June. Name of month? So the name of month, sorry, sir, I don't know the name of month. April, May, June, the very first quarter. Right. Y- And y- tell me, government expenditure is more or private expenditure is more in GDP? So in that case, probably the government expenditure is more in the GDP. Okay. Export is more, yeah, import is more. So the import is, sorry, the export is less and the import is more. Okay. That's why the trade deficit is there. Yes, sir. Okay. Yes, sir. India's GDP is more, yeah, GNP is more. Sorry, sir. This I don't know. Okay. What is methodology to calculate the GDP in India? So basically, what we use is it's a method called benchmark method. In this, the same quarter, last financial year, that data is used and it's extrapolated using the various indicators and information that is given by different ministries, and then the final result is given. What is the formula used to calculate GDP? So it's the product method. Okay. The We add the GVA. Okay, okay. And suppose I want to find the GDP, official GDP data of Uttar Pradesh, where we can find this data. So it's on the website of Department of Economics and Statistics of the state. Why not MOSPI publish the GDP, state GDP data? So because many times there have been diverges in the data many times, and this is also said to be a flaw that many a times there has been this. So Mosby does, but in that case, I feel the state departments are doing because they are able to assess better. So yeah, yes. Okay. And tell me, what is condition of Nepal? There is a protest in Nepal. So what is the current condition of Nepal? So it's like the government has fallen, and it's like sorry, sir, I haven't read about it as of now. Why it is called Gen Z protest? So because it's mostly because of the social media ban that has happened there, and it's majority because it's only the Gen Z that they use social media, and it was only that started because of that in the first place, and the deaths that happened, and then it got more serious. Okay, sir. Okay, Devashish, define statistics. So statistics is the science of aggregating numerical data, and then or also it can be said the science of collecting and processing and publication of numerical data. Can we say that the statistics is a branch of mathematics? So I'll say no, because maths the it's like very deterministic, and the it's very abstract and pure, I'll say,
because for example, if we can consider simply the Pythagoras theorem, we know what answer will come. But in many situations, it's needed that we need probability in many cases. So for that, to make inference and in which the probability, in which we are very uncertain, in that case we need probability. For example, if simply if I take the white blood count, in that case, for a like I can't say that simply 55 is a nice number or something, any number. In that case, it will be better if I give a number which is in range and with a confidence interval. So in that case, statistics is very important. Okay. We have the linear relationship between in mathematics between two variables, and same thing in statistics between two variables. So, what is the difference between these? Uh, the linear differences in two different subjects. One is mathematics, another is in statistics. So in statistics is mostly related to correlation, linear relationship, and in mathematics, it's sorry, sir, I have no idea about it. Right, right, okay. Okay, so Dev, can you tell me the difference between journal linear model and generalized linear model? So sorry. Okay, it's okay. So why we use the sampling theory? So because in many cases, like when we have cost and time constraint, in that case, large surveys cannot be done. So in that case, sampling theory is the only way to go Okay, because of the constraint. okay, but we have so many sampling theories like stratified sampling, simple random sampling, cluster sampling. Why we use different sampling theories? So because every sampling theory, like it's not one size, like one solution fits all in this case. Because if, for example, if times if I'm using sampling theory, the sample that I'll get, it might won't be even representative. In that case, I'll only have to go to certified sampling. And and also because if I only take the example of simple random sampling, administratively also they can be so much scattered that even in that case it's better that we have a stratified sampling. So in that simply it's also like, for example, if I compare stratified and cluster sampling, many a times we don't have control over how the clusters are occurring. So in that case, only way we can go is cluster sampling. Sometimes we are constrained by cost, and sometimes it's like we have to increase the precision simply. So there are different conditions in which different samplings are used. Okay, can you define the difference between cluster and strata? So cluster, it's like they are homogeneous, sorry, they are heterogeneous within, and the strata they are homogeneous within, and they are heterogeneous, the strata they are heterogeneous among, and it's opposite for that. And also, when cluster we have to use, it's only for in terms of cost and time. But if we were making strata, it's only to increase the precision. Right. Can we say that the Cauchy distribution is a particular case of normal distribution? No, sir, because it's never tends to normal in cases many. Okay. What is CLT? So CLT states that if we take a large number of samples from a population, then the sampling mean of the if we draw a curve, like if we have a population and we take repetitive samples from the population and we plot these sample means in the form of graph, then the curve that we'll get will be approximately normal. It basically states that irrespective of what was the distribution of the data, in the end, the curve that we'll get will be approximately normal. Means sample mean is always approximately normal as sample size increase. Yes, sir. Yes, sir, almost. What is the consistency? So consistency, it's like if we have a sequence of xi's x, then in probability it will surely if it's consistent, then it will also be convergence in probability that the probability of it converging will always almost tend to one as
So Suppose we have a sample of 50 observation and we calculate the sample mean. Is this sample mean consistent estimator for population mean or not? sorry, so the sample size was 50. Yes. So it depends on the population as well, that what size the population is. If the population size is very big, then maybe it's not even a representative in that case. And it also depends on the how representative the sample is. If we collect all the samples from one place, then because it's this statement I feel lacks the data basically, that there are many scenarios to consider that to say that it's representative and can be estimated for population. Okay. What is the difference between CLT and weak law of large number? The weak law of large number, it's like the probability it's one that the values that are unavoidable take the arithmetic mean of that and the expectation of that that's arithmetic mean. It will almost the difference between them will be almost less than a number in epsilon, and this will tend in probability to one. And also there's just one more criteria that if we have bn which is defined by some of the variances, then if we divide it by n square, then it will tend to zero. Suppose we have a observed data in which arithmetic mean is same as the geometric mean, which is same as the harmonic mean. Yes, Can sir. you define such data in which the So, arithmetic mean, harmonic mean, geometric mean all are same? so it will be symmetric data, and in that case, all the observations I feel will be same. All the observation must be same. Yes, sir. Can you define the relationship between median, mode, and arithmetic mean? So in the symmetric, it's they are like they coincide, and if it's skewed, then there are different criteria for that. If it's positive, then the mean will be greatest, then mode, and then medium. And if it's negatively skewed, then the mean will be the smallest, and then the median, and then the mode will be the largest. Okay. Median is the positional measurement of central value or numerical measurement of central value? So it's a numerical, and median is the positional because it divides the data. Okay. Why median is the positional measurement? So because it divides the data into two equal parts, that the values that are before it and the values that are after it are almost equal. And if say we have income inequality data, then in that case median will be better as a positional average. Okay. Okay, Devashish, what is the income criteria of OBC NCL? So it's 12 lakhs per annum. Are you sure? Uh, Yes, sir. Okay. I think it is 8 lakhs. Yes, sir. I was also thinking it's Mhm. 8 lakhs. Okay, okay, no problem. Devashish, tell me, when CPI data has been released by MSPI, so it is considered the sampling or will we go for a total numerations? Sir, it's basically sampling data because it's a price statistics division enumerators they go in. So it's not a complete enumeration. It's like they go to the small places and they collect a sample of data, and based on that they collect. So it's So, sample. so CPI data is based on month, year on year, or base year effect also. So there are different. Sometimes it's compared with the base year, and sometimes for inflation it's So compared with the. is there concept of base year in CPI also? Yes, sir, there is. What is base year of CPI? So for so which CPI, sir? For rural urban combined, CPIC, it's CPIC, CPIC. sir, it's 2012. 2012. Okay. And what is the headline inflation of Uttar Pradesh? Sorry, sir, I don't know this. Okay. Uh, Tell me, what is the difference between infant mortality rate and child mortality rate? Uh, so infant mortality rate is the number of deaths that are happening in the
in the year divided by total number of live births. Whereas child mortality rate, it's not the first year, it can be for any year. And the population is not just a live birth. In that case, it's a total population Okay. of children. Why there is so much delay in the population census, decadal population census? What is reason So, behind delay? so there are two reasons I feel. The first one was that because of the COVID, it was like not possible back then. And since then, it was also like there were protests and there were many uh, like people were asking for caste-based census in that as well. So for to come at that decision, it took a lot of time. Do you consider the decadal population census is very, very important? Yes, sir, it's important because many of the government policies are based on that. And if we have the data of, say, 14 years ago, then it's like it's for that we need new data because every policy, if money is being spent, then at least we should have a head count of how much people are there. Okay. Do you consider the women reservation is productive? Yes, sir, given how the situation in our country has been for long, it's necessary in many cases. ठीक है. Final questions, Devashish, to you. You have given an opportunity to convince the board members to not select to you. Will you convince? No, sir. Okay. Thank you so much. And your interview, formal interview, has been ended. Right. If you have particular questions, you may ask. So पहला तो जीएलएम और जनरलाइज ये वाला क्वेश्चन बता कभी दिए. भी इंटरव्यू बोर्ड आपको, आप तो पहले इंटरव्यू दे चुके हैं लास्ट ईयर, राइट? यस सर. यदि ये क्वेश्चन आपको पूछे तो नो थैंक्स करके वहां से निकलना है आपको, उसको नहीं कुछ पूछना है, ठीक है? नो अब थैंक्स. हम लोग ओके क्वेश्चन सर. आंसर पे आते हैं, हाँ, तो अब हम पूछते हैं। अब आपका क्या रहा, लास्ट ईयर कैसा रहा, थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या अ, आपके क्या क्वेश्चन है, पहले आप पूछिए। सर मैं पहले बता दे रहा हूँ आपका आंसर. सर पिछले साल मतलब मेरा पहला था, तो फिर मतलब बिल्कुल एक होता है ना कि आइडिया नहीं होता है क्या, कि मतलब आप देख लो तब भी बिल्कुल आपको आइडिया नहीं मिलता कि पढ़ना क्या है. एंड वहां जाके मैं गया और मैम जो चेयरपर्सन मैम थी, उन्होंने सीधा अपना ही चश्मा उतारा. एंड शी वाज लाइक, देवशीष आप स्टैट्स बैकग्राउंड के हो, हम लोग स्टैट्स के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे. एंड मैं तभी समझ गया कि मेरा इंटरव्यू गया. हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। और वो उन्होंने सीधे मुझसे पूछा कि रशियन ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, तुम क्या डेटा कलेक्ट करोगे. एंड फिर उससे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वर्ल्ड में पूरे, मतलब उन्होंने ऐसा डेटा पूछा, हाँ, वेब ब्रैंगलिंग, वेब नॉर्मली वही स्क्रैपिंग. पता होता है जिसका। अच्छा, कितने मार्क्स थे देवाशीष लास्ट लास्ट टाइम? सब मेरे 112 थे. हाँ, कम थे, कम थे, कम थे। and लगभग लगभग 20 नंबर कम थे। 15-20 नंबर तो बिल्कुल कम। अच्छा, टोटल कितने नंबर से रुका है आपका? सब 5 मार्क्स. ओहो, ओ इंटरव्यू थोड़ी, शिट। हम लोग थोड़ा अवेयर किए थे आपको उस टाइम, है हाँ, ना, कि पिछली थोड़ा बार भी सा शायद आप आपके लोगों का। आपकी थोड़ा सा हम्म। जनरल तो थोड़ी। इस बार थोड़ा सा थ्योरी में इम्प्रूव हुआ होगा ना? यस सर, इस बार मैं जीके पे फोकस कर रहा हूँ. जो टैरिफ्स वगैरह हो रहे हैं नेपाल वाला, मतलब नहीं नहीं, क्योंकि जो दो. आपने 800 मार्क्स के जो एग्जाम दिया है मेंस उसमें भी मेंस इम्प्रूव हुआ होगा ना? मेंस तो ठीक गया ना आपका इस बार? यस सर, ठीक गया था. हाँ गुड, इस बार तो कंफर्म है आपका। हम्म। आपका सर इस बार। बाकी कंफर्म. मुझे बाकी एक्चुअली लास्ट ईयर भी आपका लग रहा था, हो पर जाएगा, वो ठीक, इतने कम नंबर का मार्जिन रहेगा। एक्चुअली इंटरव्यू मुझे आपका ठीक लग रहा ठीक था। था, 112 नंबर दिए वो थोड़ा सा मतलब। हम्म। सर एक तो इतना सडनली उन लोग ने कई मतलब. कई बार होते हैं, हम्म। बोर्ड का भी फर्क पड़ता है, हमारा बैकलॉग बोर्ड बोर्ड के जैसे आपका हाँ बोर्ड ही स्टार्ट ही ऐसा कर दिया हाँ, वो इंटरव्यू को, बोर्ड में का भी थोड़ा बोर्ड सा का भी फर्क पड़ता है। इम्प्रेशन हो तो जाता है। गॉड से कि इस बार आपको अच्छा बोर्ड मिले, और आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आपका है, कॉन्फिडेंस तो फुल एंड फुल है, बिल्कुल ठीक एकदम। बता है। नॉलेज भी और आपको है। एक एक चीज का और भी ध्यान रखें, कोई गलती यदि हम बता दें तो उसको रिकरेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बीच में भी कह सकते हैं सर मुझे याद आ रहा है ये ऐसे था, हम्म। तो उसको ये लगेगा जो चलो आपको याद तो आ गया कम से कम, हाँ, ठीक अगर है? गलती हो जाती तो बोल देते हैं सॉरी, हाँ, वो गलती से बोल दिया जैसे था। मैंने आपको एनसीएल का इनकम क्राइटेरिया पूछ लिया, आप 12 बता दिए तो हम्म। 8, हाँ सर सर ऐसे बता सकते हो, वो होता है कि रीअफर्मेशन हो जाते हैं, मैंने हाँ। भूल गया इस चीज को। यस और सर. बाकी थोड़ा सा ना प्रेस रिलीज वगैरह को अच्छे से देख लीजिएगा, जीडीपी यस सर. बजवर्ड होते हैं, जीडीपी जीडीपी, और ओवर एक्सपेक्टेशन था, हमको जितना हम चाह रहे थे उससे ज्यादा आपकी जीडीपी आई है। अब टैरिफ के कारण Q2 जीडीपी डाउन जाएगी, मैंने एक सिली क्वेश्चन डाल दिया जीडीपी के बीच में, आपने देखा क्लेवरली, मैंने आपसे मंथ पूछ लिया, और आप थोड़ा सा लगा कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया, आप साइलेंट हो गए, मैंने मंथ पूछ लिया। तो कभी ऐसे थोड़ा सा हो ना, तो थोड़ा सा सब रुक सकते सब हैं। मंथ का जवाब क्या होगा?
वही अप्रैल में जून का था हमारे पास डेटा, क्वार्टर वन। वही, हाँ। हाँ, तो सिंपल था, लेकिन आप थोड़ा घबरा गए वहां पे, तो टेस्ट करता है कई बार ना। ठीक है। और बाकी ठीक है आपको। बाकी ओवरऑल तो बेस्ट है, क्यों 112 नंबर मिले हैं 130 तो इस वैकेंसी। बार आपके आने ही है हाँ, आपको। इतने तो होने ही चाहिए। अरे सर, ऐसा मत बोलिए, ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए। नहीं, नहीं नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है बेटा, इसको कॉन्फिडेंस सर। कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के लग नहीं रहा हमें। नहीं ठीक। जहां अगर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता तो हम बोल देते हैं हाँ, कि बेटा ओवर कॉन्फिडेंस ओवर है, इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता करो। है, रिजिडिटी है, आप ही हाँ जो बोल रहे हैं वही सही हाँ, है, या वो नहीं है। बहुत वो ऑथोरिटेटिव नहीं है। आंसर दे रहे हैं, उसको हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस का कोई क्वेश्चन मार्क है बेस्ट ही नहीं करना, आपके कब बॉडी लैंग्वेज। इंटरव्यू कब शेड्यूल किया है? सर मेरा 15th को है, पहले दिन। अच्छा, फर्स्ट है। अभी टाइम है आपके पास, फोरनून सेशन है या आफ्टरनून सेशन? सर मॉर्निंग, आफ्टरनून। आप पहले ही होंगे, मॉर्निंग सेशन में थोड़ा टाइम ज्यादा देता है, ठीक है। हाँ। धीरे धीरे वो भी टायर्ड होते जाते हैं, टाइम कम कर देता हम्म। है। कुछ चीजें जो आपको पूछे तो थोड़ा सा समझ के, मान ली कुछ हाइपोथेटिकल कंडीशन रख देता है, थोड़ा टाइम ले लीजिए, कोई इतनी जल्दीबाजी में जवाब नहीं देना। हम्म। ठीक है, ज्यादा टाइम ले रहा तो उससे परमिशन ले लिए। ठीक है। और उस टाइम में आपको थोड़ा सा अपने नीचे की तरफ देखना है, कहीं इधर उधर नहीं देखना, हम्म। क्योंकि एक तो दो मेंबर तो उसके बॉडी ऑब्जर्वर ही होते हैं। वो हम्म। आपको वैसे पर्सनैलिटी वाइज तो आपको कोई दिक्कत ज्यादा ना होगी। ना ना, बिल्कुल परफेक्ट है। एवरीथिंग इस इज। बार आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली, जो क्वेश्चन लास्ट टाइम आप लैग कर रहे हैं हमें हाँ। याद है, तभी मैंने सर को बोला लास्ट टाइम हम्म। तो हम मिले हुए हैं। हम्म। ठीक है। यस सर। तो होपफुली बेस्ट से दीजिए, और मन में कभी अभी कुछ क्वेश्चन आपको टिल 15 तक रहे तो रहे तो आप, हम तो लोग आप हैं डायरेक्ट अभी। भेजिए, मैं आप उसका आंसर ग्रुप में कर। एडिट भी हैं तो वहीं पे आप पूछ सकते हैं। गिरीश सर हैं। अच्छा। आप डायरेक्ट मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं बेटा। हाँ, कोई कुछ इशू भी नहीं। जो सर भी। तो फिर मतलब लास्ट 4 days है, तो मतलब किस चीज पर फोकस करूं, मतलब कोई। देखो, स्टैट्स तो आपका ओके है। मैं स्टैट्स में तो कुछ ठीक है, ज्यादा है। ठीक है। आप डाटा से रिलेटेड आप बात कर लीजिए, जो प्रेस रिलीज वगैरह है हम्म, मॉस्फी वगैरह की, उन पे आप थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि सर वो। इस बार भी उन्होंने यही कह दिया कि स्टैट्स से तो हम कुछ पूछेंगे नहीं। तो हम्म, एक वो मेंटली थोड़ा सा रहता है हाँ ना। हाँ, वो हम्म। जान के करता है कई और बार। वो स्टैट्स पूछेगा भी तो जितना मैंने पूछा है वो इससे कम ही पूछेगा आपसे। हम्म, मैंने सर अच्छा जैसे बताया। सर जैसे पीआईबी का मैं देखता हूँ रोज, पर मैं सिर्फ मॉस्पी का देखता हूँ डेटा, कि हम्म। उनकी प्रेस रिलीज क्या होती है। हम्म, पर जैसे अब उसमें अब इतना टाइम नहीं रहता है, पता चला लेबर मिनिस्ट्री निकाल दे। वैसे इस हम्म। बार मैंने कोशिश। उतना करना भी नहीं उतना करना। करना भी नहीं। अच्छा, देख। थोड़ा सा ना एक दो दिन चार दिन का ये न्यूज अच्छे से देख लेना। हाँ, न्यूज देख। रिसेंटली अगर कुछ हुआ, एक घंटा पहले भी अगर कुछ हुआ, एक दिन हम्म। पहले भी अगर कुछ हुआ, तो वहां से वो पूछेगा क्वेश्चन आपसे। अब जब यूपीएससी के आप इंटर करने जाएंगे ना, तो उससे पहले आप डिजिटल एडिशंस मोबाइल पे थोड़ा देख लीजिए क्या हेडिंग्स चल रहा है, हाँ। क्योंकि वो लोग तो पढ़ते रहता है ना, पूछ लेगा क्या हेडिंग्स है। जैसे हम्म। मैंने पूछा करंट सिचुएशन नेपाल का क्या है, मैंने ये नहीं पूछा कल परसों क्या हुआ था, करंट क्या है सिचुएशन। हम्म। तो ये जान के होता है, जैसे कल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लेगा क्या काम करते हैं। तो हम्म। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, हम्म। और इन एब्सेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट वो उसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है। तो इसको बैलेंसली आपको करना है, इस बार तो कोई कमी हमें नहीं दिख रही है। हम्म। बाकी तो उस दिन पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कई हम्म। बार, लेकिन आपको ना एकदम अच्छे से जवाब देना। ठीक है। तो लास्ट ईयर जैसे एकदम हाँ इतना सडनली पूरा हो गया, मतलब हम लोग में तो मतलब होता है ना कि अंदर फील बस गई थी कि चलो क्लियर हुआ है। और हाँ। वो एकदम अचानक से एकदम सडनली एकदम हो गया, मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, बट कोशिश कर रहे हैं कि पूरा हो जाए नहीं कोर्स। बेटा, ऑल द बेस्ट पिछले। है, बिल्कुल इस बार कंफर्म होएगा आपका, कंफर्म होएगा। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो ना, तो थोड़ा सा उसको लिख के भी प्रैक्टिस करना। लिख के प्रैक्टिस करो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई हाँ, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम। ऐसा हो आप नेट पे हाँ भी सर्च करिए, हमें लगता है जो सर से पूछ लें तो डायरेक्ट पूछ हाँ, के कोई पूछ इशू सकते नहीं है। हैं, ठीक कोई है। इशू नहीं है। और फाइनली। सर मेरे पास 2 क्वेश्चन है, सुधीर सर, मैं आपसे पूछ लूँ। जी जी, हाँ, बताइए बिल्कुल। बेटा जी। बस छोटे छोटे हैं, जैसे हम हाँ लोग कॉची डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, तो जी। उसमें हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड कॉची होता है वेरिएबल, और उसका जो अरिथमेटिक मीन होता है, स्टैंडर्ड कॉची बहुत सारे होते हैं, हम्म। उनका भी दोनों सेम डेटा देता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड कॉची सफिशिएंट है। नहीं, स्टैंडर्ड कोचिंग किसका सफिशियंट है? मतलब किसी भी पैरामीटर का इन जनरल, जैसे हाँ, मीन का। स्टैंडर्ड किसी का सफिशियंट नहीं होता है। स्टैंडर्ड में एक खास बात होती है, उसका मीन और वेरिएंस फिक्स होता है, 0 और 1। ठीक है सर। और दूसरा एक और चीज उन्होंने पूछा था कि एमएलआर क्या होता है, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, और जीएलआर दोनों में अंतर क्या होता है, तो फिर जीएलआर मतलब वो। फुल फॉर्म, जीएलआर। सर वो, अरे जनरल लाइक्लीहुड रेशियो शायद होता है, हाँ, जनरलाइज चलो लाइक्लीहुड। मैं आपको व्हाट्सएप पे करता हूँ इसका रिप्लाई। आप मेरे से पूछो, मैं वॉइस नोट वहां पे भेज देता हूँ आपको। हाँ सर, उस पर हाँ, भेज कोई भी दीजिएगा। अगर प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप भेजो, मैं आपको वॉइस नोट से या ग्रुप पे भेजो, वॉइस नोट से करता हूँ क्लियर सारी चीजें ना। ओके ओके सर। सेम ओके डाउट ओके। बहुत सारे बच्चों के हैं। तो अभी हम लोग हैं, अभी तो हमने एक इंटरव्यू सेशन लिया है।
अभी वो टीचिंग वाला तो अभी चल ही रहा है ना। ठीक है, हाँ चल, हाँ। ऑल द बेस्ट बेटा। ठीक है, ओके, अच्छा थैंक यू रहेगा, सर। प्रॉस्पेक्ट हाँ सही बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सर। ओके। बाय सर।